भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब सॉरी यार, वो असल में मेरे बेटे को फिर उधर ही चोट लग गई जहाँ पे वो हुई थी, तो इट वाज जस्ट आई हैड टू इमीडिएट। हाँ, अब दोबारा आई हैव टेकन टू डॉक्टर एट 6:15। soon, sir. आमीन आमीन। हाँ अच्छा, कल की ओके। Sir, will we start SUS assaults today? यप यस अभी भेज दें बेशक रिकॉर्डिंग। ओके मेरा बच्चा, अभी भेजता हूँ। नहीं, बड़ा मजे का चैप्टर है एसएमएस वर्ड्स। आई होप यू विल एंजॉय। सर जी बच्चा। सर कल की रिकॉर्डिंग्स भेज दें प्लीज। ओके, ऑर्गेनिक की। सर दोनों। ओके थैंक यू सर। कल तो सिर्फ हुई ऑर्गेनिक ही नहीं थी। हाँ, कल से वाली ऑर्गेनिक की हुई थी, ऑर्गेनिक ही भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा। सर ऑर्गेनिक का टाइम चेंज हो सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पे लेना, दूसरी क्लासेस भी होती हैं। हाँ सर, सही में मैंने तो बहुत मुश्किल से 1-2 क्लासेस ली और रिकॉर्डिंग भी सबस में नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो गया ऐसे तो। अब सर बड़ा मुश्किल हो गया। सर ये टाइमिंग ठीक है, आप ऐसे ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, चलिए everyone. So basically, let's start off with acids, bases, and salts. वो he again fell on the chair. तो वो फिर उसको लग गया ज़ैनब। खैर बार अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चोटें लगती रहती हैं बच्चों को। So everyone, today we start off with acids, bases, and salts. Very important chapter. Very important chapter. Very interesting chapter. And अगर हम structured questions ले लें और अगर हम ATP ले लें, right? So we ask you these questions. Questions regarding this chapter frequently, right? Please try to understand each and every word. I'm moving on now, and okay, Taha, and I hope you all can see my whiteboard now. Please stay very focused. So guys, I hope you all can see the whiteboard, and I'm starting off with a new chapter, very important chapter. Listen please very carefully, and this is acids, bases, and salts. Okay, so please stay focused. Chaji, as I told you earlier as well, हमारे जो O level और IGCSE है, इसमें मेन थिंग्स एंड मेन चैप्टर्स जो कि आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, उसमें से वन ऑफ द चैप्टर्स इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ, so please stay focused. There we go. Guys, firstly, what is an acid? What is an acid? So acid is a substance which releases H positive ions in aqueous solution. So acid is a substance which releases या dissociates. जी बच्चा, I think यहाँ पे वो शायद उसका वॉइस का इशू है, मे बी लेट मी क्लियर द वॉइस। जी बच्चा। मैं भी बता रहा था आपको, like I'm working on it क्योंकि इस रूम में echoing होगी थोड़ी सी। I hope it'll get okay. H positive ions in aqueous solution.
Acid is a substance which releases H positive ions in aqueous solution. Let's say, for example, HCl, when added in water, it gives you H positive ions aqueous plus chloride ions aqueous. अच्छा, HCl खुद एक असल में गैस है. It's called as hydrogen chloride. It is itself a gas. मेरी बातें बहुत गौर सुनिए please. And when added in water, since water में add करने के बाद अब H positive ions free हो गए हैं, so this is called as hydrochloric acid. तो सर एक हिसाब से ये भी एसिडिक ऑक्साइड ही है. हाँ, नहीं, अब देखो ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन होती है ना, ये ऑक्साइड थोड़ी है. सो बेसिकली जो HCl गैस है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड. लेकिन जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो उसके H पॉजिटिव आयंस क्लोराइड आयंस बन गए. दिस एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको एसिड कहते हैं. तो मैं HCl गैस को एसिड कहूंगा. सो HCl गैस मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाल दो. जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाल देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसको एसिड कहते हैं. और जो HCl गैस है, इट विल बी कॉल्ड एज एन एसिडिक गैस. सर हम ये कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड प्लस वाटर, वो एसिड बनेगा. लेकिन वो कोवलेंट कंपाउंड जिसमें H होना चाहिए. ओ हाँ जी, H का साइन आ इसमें. जी सर. राइट. तो फिर जो सॉल्यूशन बनेगी इट विल कॉज इट विल बी कॉल्ड एज एन एसिड. हाइड्रोजन क्लोराइड को हम एसिड नहीं कह सकते क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है. लेकिन HCl aqueous कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम एसिड बोल सकते हैं. एसिड असल में HCl है, aqueous. ये एसिड है, असल में ये एसिड है. राइट. दिस इज द एसिड जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं. HCl गैस एसिड नहीं है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है. HCl गैस तो मॉलिक्यूल होता है. इट्स अ मॉलिक्यूल गाइस. HCl is a molecule like this. HCl को आप एसिडिक कह सकते हैं. I mean you can say it's an acidic substance क्योंकि जब इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये एसिड बना लेगा. लेकिन HCl गैस को एसिड नहीं कहते. Why? Because HCl gas does not have H positive ions. Hydrochloric aqueous has H positive ions. Similarly, अगर मैं बात करूं आपसे सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड जनरली इट्स लिक्विड. जब उसको वाटर में ऐड करें तो it gives off 2H positive ions aqueous plus sulfate ions aqueous. Now this is what you call as sulfuric acid. I mean माना नाम इसका भी सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये एसिड नहीं है, ये एसिडिक है. इसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है. लिक्विड स्टेट में H पॉजिटिव, लेकिन aqueous स्टेट में H पॉजिटिव आयंस हैं. तो इसलिए this is called as an acid in reality which has H positive ions. This is called as an acid which has H positive ions, right? In its aqueous state. सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, आप ये कह रहे हैं. यानी कि असल में पता है क्या, हम H2SO4 लिक्विड को भी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं एज अ नाम. लेकिन अगर आप मुझसे पूछे वाकई वो एसिड है, वो एसिड नहीं है. जो सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है वो एसिड है. H2SO4 aqueous is by nature an acid. H2SO4 liquid नाम उसका सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन वो एसिड है नहीं क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है. सर जी बच्चा. सर हाइड्रोजन आयन होगा और एक्वस होगा तो होता है वो एसिड बनेगा. यस एग्जैक्टली, उसको कहते हैं बाय नेचर एन एसिड. सर अगर वो पेपर में हमसे पूछते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिखो तो H2SO4 लिखेंगे, आगे एक्वस लिख देंगे. फिर एक्वस लिखेंगे. एग्जैक्टली. नीचे ब्रैकेट्स में AQ लिखना होगा ना. AQ लिखना होगा ब्रैकेट्स में. यस. तो हम ये कह सकते हैं कि H2SO4 liquid is acidic, but H2SO4 is an acid, a proper acid by nature. Is the HCl gas is acidic, लेकिन HCl aqueous is an acid, a proper acid. सर एसिडिक मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ एसिड वाली होंगी, लेकिन इट्स नॉट एन एसिड. क्योंकि H2SO4 लिक्विड आप एसिडिक कह देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक है. लेकिन चूंकि उसमें वाटर नहीं है, क्योंकि एसिड, अगर मुझे एक चीज को एसिड बोलना है
तो उस चीज का पानी में डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है, उसका पानी में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करना बहुत जरूरी है, फिर मैं उसको आई मीन एसिड बाय डेफिनेशन बोलता हूँ। ये पॉजिटिव और माइनस होना करेक्ट है आपस में? नहीं, ये फ्री आयंस हैं, तो एसिड्स गिव फ्री आयंस इन वाटर। एसिडिक का मतलब अगर अगर उसको पानी में ऐड करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे, लेकिन ये खुद एसिड नहीं है। they have a property of being acidic, but it's not an acid because an acid should have H positive ions. लाइक सर सिर्फ एक्वस फॉर्म में एसिडिक होंगे, एसिड होंगे सर। हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ एक्वस स्टेट में कोई चीज हो तो उसको एसिड कहलाई जाती है, because it has H positive ions. अब फॉर एग्जांपल I can give you millions of examples. नाइट्रिक एसिड, अब HNO3 फिजिकल स्टेट में at RTP it's liquid, अब ये एसिड नहीं है, it's a molecule. हाँ अलबत्ता एसिडिक है। अब अगर मैं इसको पानी में ऐड करूंगा it will give you H positive ions and nitrate ions. Since now the solution has H positive ions, so it's called as nitric acid. सो लाइक यू मीन गैस और लिक्विड फॉर्म में जब वो होंगे तब वो सिर्फ एसिडिक होंगे, एक प्रॉपर एसिड नहीं होगा, सिर्फ एक्वस फॉर्म में होगा। Exactly. सो लाइक जब हम बेस को जब हमने न्यूट्रल करना हो, सो हम रिएक्ट करेंगे उसको एसिड के साथ, वो भी एक्वस फॉर्म में होगी या फिर लिक्विड में भी हो सकती है वो? नहीं, वो एक्वस फॉर्म में। अगर मैं उसको लिक्विड फॉर्म में ऐड करूंगा, जब वो ऐड करेगा, सिंस बेस अगर एक्वस है फिर वो ऑटोमेटिकली एसिड बन जाएगा, क्या नहीं? अगर बेस भी एक्वस है, पानी पड़ा है बेस के अंदर, तो अगर आप उसे लिक्विड एसिड पहले भी नाइट्रिक, तो फिर भी पानी में डालने के बाद एसिड बन तो जाएगा। लेकिन सर हम इसको पहले भी नाइट्रिक एसिड कहते हैं, बाद में भी नाइट्रिक एसिड कहते हैं। हाँ यस। Generally what we do is we add an acid, already an aqueous state of acid हम add करते हैं for reaction and utilization. No sir, for example like ये जी दोबारा पूछे। जी सर आई वाज आस्किंग फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन जब होती है उसमें हमारे पास एक एसिड होता है, एक बेस होती है, बेस का कलर चेंज होता है जब आप एसिड ज्यादा पोर करते रहते हो, तो वो भी एक्वस में होती है? एक्वस एसिड हो या बेस हो, दोनों एक्वस स्टेट में होते हैं। ओके सर। एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व्ड। जब तक एसिड या बेस को आप पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो एसिड बेस एक्ट नहीं करेंगे। तो सर इन रियलिटी जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, जो फॉर्म लिक्विड ही होती है वो एक्वस फॉर्म में हमें मिलता है, केमिकल मिलता है। यस। ओह ओके सर, थैंक यू। Now let's move on further. Now everyone, देखिए जो एसिड है, it can be defined as a weak acid and strong acid. An acid, it can be a strong acid or it can be a weak acid. इस बात बहुत गौर से लेगा। What is a strong acid which completely dissociates an aqueous solution? मुझे ये जो आवाज है कुछ ज्यादा एको नहीं कर रही? बहुत ज्यादा कर रही है। यस सर। एक सेकंड, मैं इसको जरा, बस मुझे सिर्फ खाली 30 सेकंड्स दे दें प्लीज।
I hope that this voice will go clear now. Is my voice clear now? Yes, sir. जी sir. Okay, so basically, an acid, it can be a strong acid and it can be a weak acid. Remember, guys, what is actually a strong acid? Strong acid which completely dissociates an aqueous solution, right? So a strong acid completely dissociates an aqueous solution. Whereas, what is a weak acid which partially dissociates an aqueous solution? Sir, I had a question. Ji, please. Sir, what if we use the term ionize instead of dissociate? मैं इसी वर्ड पे आने लगा बेसिकली आप चाहे वर्ड डिसोसिएट यूज कर लें आप चाहे वर्ड आयनाइज यूज कर लें इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आप डिसोसिएट्स लिख लें आयनाइजेस लिख लें इट मीन द सेम थिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल द फेमस स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HCl सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड I mean etc लेकिन ये फेमस वंस हैं एंड द फेमस वीक एसिड्स आर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोनिक एसिड सबसे ज्यादा तो वो मशहूर है ना ये क्या है CH3COH यस तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिर कार्बोनिक एसिड फास्फोरिक एसिड एटसेट्रा ये फेमस वीक एसिड्स हैं तो बेसिकली आपने ये वाले जो कॉम्पाउंड याद रखने हैं कि ये एसिड्स हैं क्योंकि एसिड्स में H होता है एसिड्स हैव H जिस चीज को मैं एसिड बोलूंगा उसमें H होगा बाय द वे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बाय द वे HF इज अ वीक एसिड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमने कभी आपसे पूछनी नहीं है लेकिन फिर भी सिंस अ चाइल्ड आस्क्ड द क्वेश्चन तो ये HF क्यों है मतलब ये रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्टिविटी यस उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है काफी अब फॉर एग्जांपल HCl जो है अगर मैं इसको पानी में ऐड करूं तो देयर इज अ साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी HCl कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन aqueous solution राइट अब देख रहे हैं कि देयर इज जस्ट वन एरो and there is sign of irreversibility यानी कि HCl has completely converted into its aqueous signs आप अगर HNO3 लेते हैं नाइट्रिक एसिड राइट इसको अगर मैं पानी में ऐड करूं तो it completely dissociates and gives you ions सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं वाटर में ऐड करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड completely dissociates and gives you 2H positive ions plus sulfate it's a complete dissociation लेकिन if I talk about weak acids so weak acids they undergo partial dissociation right let's say for example अगर HF ले लें तो it dissociates partially there is sign of reversibility यानी कि HF ने आयन दिए और आयन फिर रिएक्ट करके उन्होंने HF दे दिए फिर उसने आयन दिए फिर उसने HF दे दिया फिर उसने आयन दिए फिर उसने HF दे दिया तो ये चलता रहता है इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन है एग्जैक्टली अब अगर H2CO3 हो तो H2CO3 dissociates and gives you 2H positive ions plus carbonate let's say phosphoric acid H3PO4 it dissociates to give you 3H positive ions plus phosphate. And out of carboxylic acids, like someone else was saying as well, okay, I mean, ethanoic acid is a very famous carboxylic acid we have. Ethanoic acid.
तो अगर मैं एथेनॉइक एसिड ले लूं, ठीक है, CH3COOH, so it dissociates to give you CH3CO O negative plus H positive. ये partially कैसे हो रहा है ionize? Basically, since असल में इनके जो बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये जो HF में HF बॉन्ड है, इधर OH बॉन्ड है, यहाँ पे OH बॉन्ड है, इधर भी OH बॉन्ड है, ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं, इतनी इजीली ब्रेक नहीं करते, और अगर ब्रेक कर जाएं तो ये रीफॉर्म होना चाहते हैं, इसलिए दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन. लेकिन एज पर O level and IGCSE is concerned, you'll have to learn some weak acids. ये weak acid. Sir, ethanoic acid भी तो weak acid है ना? Yes, it's a weak acid. HF के कि ये weak acid है या strong acid? अगर तो आपको याद है कि कौन से weak acid, फिर तो आप बता सकते हैं, तो याद रखने पड़ेंगे आपको. जी हमजा, you said that how do you find valencies of the compounds? I think ये valency मैं आपको बता के आ रहा हूँ periodic chapter में, so you can't forget it. Now listen to me carefully. अब देखें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है which you have to note. Please observe. In case of the carboxylic acids, ethanoic acid के केस में, मैं प्लीज एक चीज क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन इन द पेपर्स एज वेल. याद रखें ये जो H ऑक्सीजन से बॉन्ड हुआ है, only this dissociates as an acid. H positive ion. ये जो H लगे हुए कार्बन से, इनको नहीं एज H positive ion बाहर निकाल देना. जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, that hydrogen moves out as H positive ion. Okay, please don't forget it. So sir, जब एस्टर्स बनते हैं तो एक तरफ से वो लाइक आयनाइज हो रहा है, एक वो जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. नहीं. Esterification is completely like a different reaction. Esterification में carboxylic acid does not act as an acid. Strong acid completely dissociate करता है, weak acid partially करता है, and in O level and IGCSE you'll have to learn strong acids and weak acids के कौन से हैं. Reason क्या है उसके strong और weak होने का? This is not at all O level or O level or IGCSE. और आपका पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब है या पार्शियल आयोनाइजेशन का मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब या कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब है इट्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. ये देखिए आपको डिसोसिएट का मतलब क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. पहले देखिए एसोसिएट क्या होता है. एसोसिएट मींस मिलना, डिसोसिएट मींस टूटना. तो ये मॉलिक्यूल्स टूट के आयन नहीं दे रहे, तो ये मतलब है डिसोसिएशन का. आई मीन a molecule is actually breaking up and giving you ions. Okay, shall I go on? So basically, what is an acid? An acid is a substance which will release H positive ions in aqueous solution. Some acids completely release H positive ions, right? But some acids do not. Those acids who release completely all H positive ions are called as strong acids. And those acids which partially dissociate in aqueous solution are called as weak acids. In weak acids, it's a reversibility sign, it's a reversible reaction, whereas in strong acids, it's an irreversible sign, it's an irreversible reaction. I'm moving on now. Okay. So now, everyone, listen to me carefully. हमें आइडिया हो तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा और वीक एसिड कौन सा, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल्स क्या और वीक एसिड्स की एग्जांपल्स क्या हैं. वंस वी हैव अ क्लोज आइडिया रिगार्डिंग इट, वी मूव ऑन फर्दर. देखिए यहां पे मुझे एक दो बातें क्लियर करनी है क्योंकि सम स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन व्हिच आई वांट टू क्लियर राइट अवे. ठीक है, राइट अवे. तो स्टे वेरी अटेंटिव क्योंकि बुक्स पे लिखा तो होता है, कभी उस वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देते और फिर आप गलत उसको परसीव कर लेते हैं, which gives rise to a wrong concept. ठीक है, attentive please. मेरे पास एक बीकर है और बीकर में HCl पड़ा है, aqueous hydrochloric acid of concentration 0.1 mole per dm cubed. मेरे पास एक और बीकर है, उसमें एथेनॉइक एसिड पड़ा है of concentration
0.1 mole per dm cube. Right? Please stay focused. I know this is a strong acid and this is a weak acid. SA means strong acid, WA means weak acid. अब अगर मैं इसके अंदर जो pH meter dip करूं, let's say this is a pH meter, इसकी pH आती है कि around 1, इसकी आती है pH around 4. What is actually pH? pH क्या होती है? It is a measure of H positive ions in a solution. और pH का relation with H positive ion is inverse. जितने ज्यादा H positive ions होंगे उतनी low pH होती है, जितने कम H positive ions होंगे उतनी ज्यादा pH होती है. इसलिए हम कहते हैं strong acids have low pH values. Strong acids have low pH values than weak acids. So that is why on a pH scale of 0 to 14, this is the acid region, 7 is neutral, and from 7 to 14 is the base region. Acids have pH less than 7 and bases have pH more than 7. So acid की pH जो होती है, right? Acid pH is less than 7 and the base pH is more than 7. जितनी pH कम होगी उतना strong acid. जितनी pH ज्यादा होगी, I mean 7 ना हो जाए, तो it's a weak acid. Yes, Azan, strong acids have a lot of H positive ions. Why? Because सारे के सारे molecules completely H positive ion में dissociate हो गए ना, solution में पड़ी H positive ions हुए. Weak acid में तो H positive ions react करके वापस उन्होंने molecules दे दिए थे, तो उसमें कम H positive ions होंगे. And acids can have a pH of 0. Okay, Zainab? Acids may have a pH of 0. और हम यहाँ चूंकि बेसिकली बेस भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो अभी सुन लें. ऑफ कोर्स आई टेल लेटर एज वेल. अगर बेस की बात करूं, जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा. स्ट्रॉन्ग बेस. जितनी आपकी कम पीएच होगी उतनी वीक बेस होगी. So basically, please याद रखना, please don't forget it, that acids, right? जितने ज्यादा एक सॉल्यूशन में H positive ions होते हैं उतनी pH लेस होती है. pH का रिलेशनशिप विद H positive ions is inverse. I don't know कि आप लोग logarithms पढ़ते कि नहीं पढ़ते in O level mathematics, लेकिन those who love maths में, तो जो एड मैथ्स में उनको आता होगा, लॉग्स पढ़ते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि लॉग लेने के बाद रिलेशनशिप इनवर्स हो जाता है, राइट? सो इसलिए जो pH लॉग होता है H positive ions का, इट्स अ नेगेटिव लॉग ऑफ H positive ions. सो इसलिए याद रखिएगा pH का रिलेशनशिप H positive ions के साथ इनवर्स होता है, क्योंकि इसमें log is playing its role, it's logarithm which is playing its role. So please don't forget it as like a general science student, that pH का relationship with H positive ion is inverse. More the H positive ion in a solution, lower the pH. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, बात कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसलिए अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है? The word can be confusing now, लेकिन please stay attentive.
Now प्लीज स्टे फोकस्ड, जो मैं वर्ड बोलने लगा हूं अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है? और ये वर्ड आपके बुक्स में लिखा होता है, ये वर्ड्स आप आई थिंक आपके टीचर्स ही बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस वर्ड पे गौर नहीं करते, और एक टीचर एक फ्लो में पढ़ा के निकल जाता है, लेकिन a teacher and the book, he does not stress on this word. So I'm stressing on this word. आपके सिलेबस में जिन एसिड्स की पीएच लो होती है, हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं। जिनकी थोड़ी सी पीएच हाई होती है, हम उसको वीक एसिड बोलते हैं, बिकॉज़ उसमें H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं। बट ओनली व्हेन द एसिड्स कंपेयर्ड आर ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। आपने गौर किया, अगर मैं इसका भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लूं, मैं इसका भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लूं, यानी कि एसिड्स जो कंपेयर किए जा रहे हैं, दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशंस। क्योंकि एक बात याद रखें, आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड करना बिटवीन टू वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। इफ यू आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, सो द अदर वेरिएबल्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि दो एसिड्स में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, तो मेरे पास एक पीएच मीटर है, उसको मैं डिप करके मैं देख सकता हूं, तो मुझे एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम लेनी पड़ेगी, कम से कम वेरिएबल तो कांस्टेंट रखूं। इफ बोथ एसिड्स हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो देखना पड़ेगा कि H पॉजिटिव आयन किस में ज्यादा है, तो आपको पीएच मीटर बता देगा। सो जिसकी पीएच लो होगी आप स्ट्रॉन्ग कह देंगे, जिसकी पीएच हाई होगी आप वीक कह देंगे। यहां मुझसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं सर इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोरोसिव होंगे और वीक एसिड्स कोरोसिव नहीं होंगे। अग्रीड, स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी कोरोसिव। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में है वो इंतहाई कोरोसिव है, उसकी पीएच 1 होती है, इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो विनेगर आप खाते हैं सूप में डाल के, वो तो कोरोसिव नहीं है, वो तो आप सूप में डाल के पी भी लेते हैं, तो विनेगर is not corrosive at all. Why? Because it's a weak acid. So basically, strong acids are corrosive, weak acids are not corrosive. Okay. So remember, acids of same concentration when compared. So the one with the lower pH will be a strong acid. The other with the higher pH will be weak acid. Like in this case, HCl has pH 1, I'll say it's a strong acid. Ethanoic acid has pH 4, I can say it's a weak acid. Right? So acids, when compared, if they have same concentration, so the acid with low pH will be a strong acid, acid with the high pH will be a weak acid. What is a corrosive acid? Acid corrosive मतलब क्या होता है? It will instantly, I mean, ये word आया इसे corrode से है ना, corrode कर देता है, यानी कि एक चीज को खत्म कर देता है। अगर मैं हाथ डाल दूं एसिड के अंदर तो मेरा हाथ बाहर नहीं आएगा, इट विल कोरोड इट, खत्म कर देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। अच्छा, आई मीन अली हैज अ क्वेश्चन, सर व्हाट इफ द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट? ओ लेवल में हम कभी भी कंसंट्रेशन डिफरेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज कैलकुलेशन आ जाएगी लॉगरिथम की। इसलिए ओ लेवल की बुक्स में आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, हम जब भी इस तरह एसिड्स कंपेयर करते हैं, वी टेक द सेम कंसंट्रेशन, ताकि कंपैरिजन ड्रॉन इज नाइस। ओके, now moving on now please guys. So basically once we know that what is an acid or what is a strong acid and weak acid, let's learn the types of acids. Acids can be monobasic, acids can be dibasic, acids can be tribasic. What is a monobasic acid? Which releases one H positive ion in aqueous solution. चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। जिस तरह HCl इसमें एक H है, HF इसमें एक H है, जिस तरह CH3COOH इसमें एक H है, राइट? तो वी कैन से कि दीज आर मोनोबेसिक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, अगर उसमें एक H है तो इट्स कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड, irrespective if it's strong acid or weak acid, I am not concerned.
What is a dibasic acid? Must be I'm closing it. So what's a dibasic acid? Which releases 2H phosphidimines in aqueous solution. For example, sulfuric acid, इसमें 2H है. For example, carbonic acid, 2H है. Irrespective of strong or weak है. So 2H है तो dibasic acid. Similarly, tribasic acid that releases 3H phosphidimines in aqueous solution. For example, H3PO4 phosphoric acid with 3H phosphidimines. So guys, now we know a couple of things, everyone. And that is, we now know what is an acid. We now know what is a strong acid or weak acid, the pH scale, and the types of acid. Acid can be monobasic, dibasic, or tribasic. पढ़ाना तो मैंने बहुत था, लेकिन unfortunately the class started late. मुझे बताइए यहाँ तक anything unclear? Yes, we have organic today, my child. GLE by this weekend, in this week.